अच्छा एटा खाली यूट्यूब हेले सब खाली हमरो सब समस्त यूट्यूब रे आछबे। Hello students, very good morning all of you. Today we will study magnetism, lecture number 2. Magnetism, lecture number 2. Magnetism, lecture number 2. In first class, we studied what is magnet, magnetism, natural magnet, artificial magnet, types of artificial magnet, properties of magnet. सबटा स्टडी करथिले in previous class, first lecture. Today we will study some important terms connected magnetism. आज केते गुडे टर्म गुडा को डिफाइन करबा स्टडी करबा. फर्स्ट वन इज magnetic field. Second term uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Third one is magnetic poles. Number 4, magnetic axis. Magnetic axis. Number 5, magnetic equator. Number 6, magnetic length. Next one is geometrical length. Today in this class we discuss all these terms. समस्ते खाता और पेन काढ एट ए टाइम नोट्स भी लिख करेक्टली समस्ते पिला माने नोट्स भी लिख एट ए टाइम नोट्स भी कंप्लीट कर ओके बुझी बुझी नोट्स लिख स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करछो काली जो डाउट क्लियर रे पिला माने की लिखिथिला लोड स्टोन लिखिछि लोड स्टोन एलओडी ब्लैक आयरन ऑक्साइड लिखिछि ब्लॉक लिखाइछि ब्लैक आयरन ऑक्साइड मु फर्स्ट लेक्चर रे कहैतिला तुम लिखुछो ब्लॉक तुम केयरफुली सुनियो सहित सीरियसली ठीक ठाक लिख स्पेलिंग मिस्टेक आउ जा डाउट रिले ठीक अछि एमते स्पेलिंग मिस्टेक करोनी लोड स्टोन किंबा ब्लैक आयरन ऑक्साइड आउची टेकन एज कंसीडर्ड एज natural occurring mineral magnetites जदि लोड स्टोन कहबो किंबा पिला माने ब्लैक आयरन ऑक्साइड कहबो Fe3O4
Fe3O4 जार सिंबल ताले सेगुडा को गुटे गुटे कोन नेचुरल ऑकरिंग मिनरल मैग्नेटाइट मन रखियो सिंपली वर्ड नेचुरल ऑकरिंग मिनरल मैग्नेटाइट लोडस्टोन LED नो LOD ब्लॉक नो ब्लैक आयरन ऑक्साइड टुडे फर्स्ट और magnetic field ए टर्म सब डिफाइन करबा द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट जेमति इलेक्ट्रिक फील्ड थिला एठे सब मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करी पढिले जानि परिबो हम पढिथिले इलेक्ट्रिक फील्ड एठे पढिबा मैग्नेटिक फील्ड सेटा थिला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एठे पढिबा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एठे अछि मैग्नेटिक पोल्स सेटा थिला इलेक्ट्रिक चार्ज तबरे आकु मध्ये कहि परिबा मैग्नेटिक चार्ज ता करेक्टली नुहे ते करेक्टली स्टेटमेंट आमे किंतु मैग्नेटिक चार्ज बोली कंपेयर करिवो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे में चार्ज कथा को इलेक्ट्रिक चार्ज एटा मैग्नेटिक चार्ज ता कहबा पोल स्ट्रेंथ आ कोनती पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक चार्ज को टिके बुझिवो पोल स्ट्रेंथ कहबा वगैरह वगैरह सब दिन छडा तनु प्रथम लेखो मैग्नेटिक फील्ड द space around a magnet within which its influence can be experienced. The space around a magnet से मैग्नेट जो टाइप रहउथो ना काई पिला माने जे प्रकार मैग्नेट होना काई बार मैग्नेट हॉर्स मैग्नेट मैग्नेटिक नीडल बॉल एंड मैग्नेट जहां भी मैग्नेट हो द स्पेस अराउंड ए magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field. ताने मैग्नेटिक फील्ड रीजन ने मैग्नेटिक फील्ड परिसर भितरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड जदि एटा गोटे मैग्नेट त चारिपटे जो रीजन जो स्पेस भितरे तार इन्फ्लुएंस तार प्रभावटा पडुतिबो से स्पेस से रीजन टा हमें कहबा मैग्नेटिक फील्ड पिला माने जदि से रीजन भितरे बा से स्पेस भितरे किछि मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंस रहिला कारणवशतः आसी गला ताले मैग्नेट तापर इन्फ्लुएंस करिवो प्रभाव पकेबो कोन प्रभाव ताडू टाणी पकेबो attraction magnetic material को टाणी दो that means the space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field. First term. Second term, uniform magnetic field. Second one is uniform magnetic field. Uniform magnetic field केमते डिफाइन करिबा ए magnetic field in a region is said to be uniform magnetic field if it has same magnitude and direction then combine करी लिखा हैगला लिखले हमें same magnitude and direction at all points
then it is known as a uniform magnetic field. Then it is taken as, considered as, known as, called as uniform magnetic field. How? Look at this diagrammatically. Students, look at this. Magnitude same, direction same. Suppose magnetic field direction inward, direction, inward, then we can say that it is in a uniform magnetic field. For outward, look at this diagram. For outward, same magnitude, same direction, it is also uniform. Here inward, here outward. Or another way, representation. Same magnitude, same direction. This will be uniform, this will be uniform, this is also uniform. Uniform magnetic field. Okay? Students, okay? Yes or no? केवल टिके चार्ट करो yes or no. Magnetic field गला uniform magnetic field. नोट ठीक रे लेख. बारंबार रिपीट करछु गोटे वर्ड, नोट को ठीक से लेख. Okay, thank you. Next, first second cover goes to third point, magnetic poles. Magnetic poles पिला मन देख आम 11th पढ़िले जदि all masses are concentrated at a point, गोटे पॉइंट रे यदि एंटायर मास रा कंसंट्रेटेड हेबे ताकु दी सेंटर ऑफ मास. If charges are concentrated at a point known as point charge, जदि चार्ज रा गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेटेड हेबे ताकु कोनटी पॉइंट चार्ज. जदि मास रा गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेटेड हेबे ताकु दी सेंटर ऑफ मास. सेमिति if pole strength माने कोन magnetic strength, if magnetic strength are concentrated at a region, then this is known as magnetic poles. That is केमति लिखिबा, that is repeat, magnetic strengths are concentrated at which what will happen, magnetic attraction is maximum. जदि magnetic strength concentrated जो region हेबे ताकू पोल काहेकि कोनती, से region ने magnetic attraction nature दा maximum. That's why that is magnetic poles. These are regions at which magnetic strength concentrated in which magnetic attraction is maximum
known as magnetic poles is known as magnetic poles. A magnet has two poles. Property re पढ़ीथिले magnetic poles exist in pair. Previous lecture number 1 रे हम पढ़ीथिले property रे it has two poles. First one is magnetic field, uniform magnetic field, magnetic pole, magnetic axis. Next goes to magnetic axis. Next, magnetic axis. ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛ ସବୁ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କହି yes or no so ଲେଖା ହଉଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଯାହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତା ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ହବନି अरे बुझ दीटा का काम होची ना नहीं डुअल ओके मैग्नेटिक एक्सिस का कहवा द लाइन which passes through the line which passes through the line which passes through the magnetic poles known as magnetic axis जो लाइन गोटे लाइन हेतिबो जे कि पोल दे की पास करथिबो लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मैग्नेट रो पोल दे की जे गोटे लाइन पास करे से लाइन को हमें कहि परिबा मैग्नेटिक एक्सिस तार्थ से लाइन को मैग्नेट रो एक्सिस बोली विवेचना करा जाय कंसीडर करा जाय गोटे मैग्नेट रो पोल दे की जे गोटे लाइन पास करे पोल दे की गोटे लाइन जदि एग्जैक्ट दीटा को पोल दे की लाइन ता पास करे से लाइन को हमें कंसीडर करिया पिला माने मैग्नेटिक एक्सिस कौन मैग्नेटिक एक्सिस देखो केमती डायग्राम रे एटा कहती मैग्नेटिक एक्सिस ओके यस और नो स्टूडेंट्स ओके magnetic field uniform magnetic field magnetic poles magnetic axis next one is magnetic equator next magnetic equator magnetic equator the line which passes through a line which is passing a line which is passing through
सेंटर ऑफ मैग्नेट गोटे लाइन हेतिबो जे कि मैग्नेट रो सेंटर दे की पास करथिबो line which is passing through center of magnet at right angles to at right angles and also center of magnet and also at right angles to magnetic axis को गोटे लाइन जे कि गोटे मैग्नेट रो सेंटर दे की पास करथिबो एवं मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होथिबो and at right angles to magnetic axis is called magnetic equator is called magnetic equator. One, two, three, four, five. Diagram like this. Look at this diagram. Suppose this is north, this is south, center O. सेंटर दे की पास करथिबो पोल दे की पास करथिले लाइन बनती मैग्नेटिक एक्सिस एंड सेंटर दे की पास करथिबो एवं मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होथिबो सेंटर दे की पास करथिबो मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होथिबो मैग्नेटिक इक्वेटर पूरा क्लियरली बुझ एवं ठीक से ड्रा कर मध्य मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक लेंथ नेक्स्ट देखिबा मैग्नेटिक लेंथ समस्त लिखिलो विथ बुझिलो दीटा काम होला कि नहीं मैंने जल्दी टिके लिखिबा सहित बुझिलो कि नहीं ये जल्दी को इतने लेट कोन ओके ओके नेक्स्ट प्लेवन देखिए मैग्नेटिक लेंथ नेक्स्ट मैग्नेटिक लेंथ magnetic length that is related to distance length ase mane distance term ase jibo the distance in between the distance in between the distance in between two poles of a magnet the distance in between two poles of a magnet is called as magnetic length magnetic
लेंथ पे बुझिया पई केमती बुझिया पड़िबो गोटे मैग्नेट कंसीडर करो सपोज इट इज ए बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ north pole south pole distance between two poles दीटा पोल भीतर जो distance it is considered or taken as magnetic length तुम मन भीतर क्वेश्चन आसतो पिला माने एई दीटा का लेंथ को कोन कहबा ताले मैग्नेट तो एतिक लंबा अछि मैग्नेट तो एतिकी पोलोडा इनसाइड रे अछि पोलोडा केबे एंड टू एंड रे रहिबे नै काहे के रहिबे नै कोन रहिबे नै एडा आगु सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढेले कहबी तुम एठे देखो प्रथमे मैग्नेटा एतिकी थिला ताले एटा तो मैग्नेटिक लेंथ हो कथा एटा काई मैग्नेटिक लेंथ हला ताले पोल रु पोल डिस्टेंस को कोनती मैग्नेटिक लेंथ ताले जे कोन गोटे मैग्नेट रो एंड रु एंड लेंथ हो कोन कहबा ज्योमेट्रिकल लाइन सपोज पिला माने लुक एट दिस बुझी परिबो इतरु सपोज एटा गोटे बार मैग्नेट भलो से बुझ सपोज एटा गोटे बार मैग्नेट ए बार मैग्नेट रो एंड रु एंड होची ज्योमेट्रिकल लेंथ ए एंड रु ए एंड एटा ज्योमेट्रिकल लेंथ किंतु ए मैग्नेट रा पोलोडा एंड रे नथंती काहे नथंती कोन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढेले कहबी तेनु मैग्नेट रा पोलोडा जेनेल टिके इनसाइड भीतर थांदी एठे इनसाइड तुम देखो पोल रु पोल डिस्टेंस कोनती मैग्नेटिक लेंथ किंतु एंड रु एंड डिस्टेंस कोनती ज्योमेट्रिकल लेंथ बुझियला ना बुझियलानी क्लियर हेलो तमाने सब बेले एया बुझिबा को हबो तुमको एया बुझिबा को पड़ियो पिला माने डियर स्टूडेंट्स एया बुझिबा को हबो मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ किंतु बहुत कम नुहे तमने एठारे मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ तमने रेशियोटा प्रैक्टिकल देखाई छि रेशियोटा द रेशियो इन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ माने एंड टू एंड जे कोन से मैग्नेट रा एंड टू एंड ताकू कहै ज्योमेट्रिकल लेंथ किंतु पोल रु पोल नॉर्थ पोल रु साउथ पोल रु पोल दूरता को कहै मैग्नेटिक लेंथ ताले रेशियोटा मन रख पिला माने अप्रोक्सीमेटली गोटे रेशियो कैलकुलेशन करके दिखाई छि जे कोन से गोटे मैग्नेट रे मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ रेशियोटा पाखा पाखी केते देखो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ 0.84 approx not exact approx केते को बही रे केते गुडे बही रे लिखाई छि 87% तामाने मैग्नेटिक लेंथ दा ए ज्योमेट्रिकल लेंथ रे 87% बोली केते को बही रे मध्ये मेंशन आइछ विभिन्न बही रे विभिन्न प्रकार आसी छि तुनेटा पाखा पाखी एटा माइंड इट मन रखिबो 85 रु अधिक पाखा पाखी तेणु एटा मन रख द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल्स टू नियरली 0.84 केतक बही रे देखो केते गुडे बही रे लिखाइ तो 87% तार अर्थ मैग्नेटिक लेंथ इक्वल्स टू 87% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ इनका बुझिबा को हो या ओके ए पार्ट पूरा कवर हो गेल टर्म मोडा सब हमें डिफाइन कर देले कोन जस्ट रिमाइंड इट मैग्नेटिक लेंथ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड uniform magnetic field magnetic poles magnetic axis magnetic equator magnetic length geometrical length ratio next
सेठे पढ़िथिले कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एठे पढ़िबा नेक्स्ट कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अंडरलाइन कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक पोलटा सब बेले गोटे पॉइंट हबो जेमिति सेंटर ऑफ मास पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड माने इटे स्ट्रेंथ रा अधिक कंसंट्रेटेड माने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रा गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेटेड गोटे रीजन गोटे अपारेंट रीजन रे कंसंट्रेटेड हेकि रहयो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ गोटे रीजन गोटे स्पेसिफाई रीजन एंटायर नी सेति में ताको गोटे पॉइंट बोली कंसीडर करा जाय गोटे पॉइंट गोटे रीजन जेमिति पिला माने हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़िथिले कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एठे एमति स्टडी करबा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सेठे जेमति पढ़िथिले स्टोरी कहानी गोटे पढ़िथिले इलेक्ट्रोस्टैटिक रे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन in between two point charges is directly proportional to product of their charges magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance of separation in between their centers पढ़िथिले ना पढ़ि नथिले दीटा पॉइंट चार्ज गोटे चार्ज मानकर q1 आ गोटे पॉइंट चार्ज मानकर q2 सेमान भितर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सपोज r ताले कोन पढ़िथिले कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक F is directly proportional to मने पकाओ स्टोरी टाको मने पकाओ F is directly proportional to q1 into q2 F is inversely proportional to 1 by r square combining करथिले F is directly proportional to q1 into q2 by r square that implies F equals to proportionality constant k नोथिले 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square similarly in this way तमे मध्ये पिला माने निजे करि परिबडा the force means magnetic force the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is defined again just gote minute the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between square of distance in between two poles starting रे लिखि परिबो this law states that starting रे लिखि दियो पिला माने टिके अटैच कर दियो टिके भलो हो नोट्स ता this law states that is Coulomb's law of magnetic force this law states that the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to
square of distance in between two poles. Let us consider, लिखिल समस्ते अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक रे नेथिले चार्ज गोटे Q1 गोटे Q2 एठी पोल नबा दीटा पोल ए पोल रो स्ट्रेंथ माने कर M1 ए पोल रो स्ट्रेंथ माने कर M2 दीटा पोल भितरे डिस्टेंस माने कर R दीटा पोल भितरे डिस्टेंस सपोज R हला ये दीटा नॉर्थ हे पारे दीटा का साउथ हे परिबे गोटे नॉर्थ गोटे साउथ हे पारे जा भी हे पारे जेमिति एठारे पिला माने दीटा का पॉजिटिव चार्ज हे पारे दुईटा का नेगेटिव चार्ज हे पारे गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हे पारे जा भी हे पारे कंडीशन एठे भी सेया किंतु एठे हम नेउचे चार्ज को Q1 एठे पोल को नबा पोल स्ट्रेंथ को नबा पिला माने ए चार्ज को रिप्रेजेंटेशन करछे Q1 एठे पोल स्ट्रेंथ को लिखिबा M1 केतक बहिर मध्ये लिखाइ तो पिला माने QM1 QM मध्ये लिखाइ तो Q तळे M काहे केमति लिखाइ छि QM इलेक्ट्रोस्टैटिक रे चार्ज होछि Q एटा को काहे बुझिया पे QM लिखा जाए मैग्नेटिक चार्ज तने मैग्नेट तो चार्ज नै ना तमने बुझा पड़ियो कोन पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक चार्ज माने एटा बुझा पड़ियो पोल स्ट्रेंथ किंतु तमे मन रख सिंपली वे रे M बोली पोल स्ट्रेंथ रो सिंबल टा स्मॉल m बुझो चार्ज जेमिति Q पोल स्ट्रेंथ टा को बुझो एमिति स्मॉल m हेले आ तुमरो कंफ्यूज आसीबो नै एठे एमिति Q1 Q2 एठारे सेमिति पिला माने टेक अप करो कंसीडर करो चिंता करो M1 M2 डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R केमिति लिखिया देखो केमिति लिखिया पिला माने let us consider two magnetic poles let us consider two magnetic poles having their pole strengths M1 and M2 having their pole strengths M1 and M2 and a distance of separation and a distance of separation small r in between two poles then according to Coulomb's law then according to Coulomb's law comma F is directly proportional to M1 into M2 and केबे मास भाबियोनी पोल स्ट्रेंथ मास केबे भाबिबो नाही हुंडांग बलिया पोल स्ट्रेंथ सेकंड वन इज F is inversely proportional to R square equation number 2 लेखुचटी मते कहले लेखुच कि नहीं ठीक से लेखुच ना नहीं अरे लेंथ टा कंफ्यूज हो कि देखो पिला माने लेंथ टा कंफ्यूज होबनी केमती देखो कैलकुलेट करिवा मन करो एटा गोटे बार मैग्नेट
एठे पिला माने मनकर सपोज गोटे आ गोटे बार मैग्नेट अछि जदि एठे कूलम्स लॉ अप्लाई करिवा एठे एटा नॉर्थ किनु एटा पोल स्ट्रेंथ मनकर m1 आर पोल स्ट्रेंथ मनकर m2 डिस्टेंस माने एई दूरताटा और किंबा जदि एटा मनकर साउथ एटा मनकर नॉर्थ एठे मनकर गोटे अछि साउथ एटा नॉर्थ एटा साउथ आर पोल स्ट्रेंथ मनकर पिला माने m1 आर पोल स्ट्रेंथ मनकर पिला माने m2 ए डिस्टेंस सबले एमति नो तेबे we can write from equation 1 and 2 we can write from equation 1 and 2 लेखो समझते from equation 1 and 2 we can write then from Coulomb's law we can write F is directly proportional to m1 into m2 equation number 1 F is inversely proportional to r square 1 by r square equation number 2 that implies we can write on combining equation 1 and 2 कौन लिख परिबा F is directly proportional to m1 into m2 by r square that implies F equals to a proportionality constant introduce suppose k m1 m2 by r square this proportionality constant depends upon कहा पर डिपेंड करे nature of medium this proportionality constant depends upon nature of medium and also माने करो nature of medium टा पिला माने air or vacuum nature of medium टा माने करो consider करो माने nature of medium दीटा पोल अछि दीटा पोल भीतर nature of medium टा air किबा vacuum अछि including SI units आउटे यूनिट मध्ये डिपेंड करे nature of medium and units a proportionality constant टा कहा पर डिपेंड करे this proportionality constant depends upon nature of medium and SI units ऊपर मध्ये डिपेंड करे therefore जदि पिला माने हम assuming करिवा सपोज नेचर ऑफ मीडियम टा एयर किबा वैक्यूम हो एवं सिस्टम ऑफ यूनिट्स टा जदि एसआई सिस्टम हुए देन वी कैन राइट F इक्वल्स टू लिखि परिबा ए के जगह रे mu 0 by 4 pi m1 into m2 by r square एट लिखिबा टिके आगो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखि देउछि क्लियरली हियर k is a proportionality constant which depends upon nature of medium समस्त लेख ठीक से बारंबार कहूची ठीक से लेख समस्त कहूची here k is a proportionality constant known as sorry here k is a proportionality constant which depends upon nature of medium and different units पिला माने अक्षरडा छोट छोट हो जाउची कि देखा जाउनी टी चार्ट कलो ना जडा पडुची डियर स्टूडेंट्स बच्चा टिके देखिलो पिला माने अक्षरडा पढिउची ना पढिउ नै ना बहुत छोट हो जाउची .
Okay. Here k is a proportionality constant which depends upon nature of a medium and different units. Assuming star mark देख लिखो. Assuming AR medium, assuming medium bracket रे AR and SI units F equals to mu 0 by k जगह लिखो. SI units k equals to mu naught by 4 pi. That is, in place of k, we can write mu naught by 4 pi. F equals to mu naught by 4 pi m1 into m2 by r square. Where mu naught is called ମୁଁ पढ़ाई दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टर्म टा म्यू नॉट को पिला माने कोनती परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नॉट कोनती परमिटिविटी दिस इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर परमिटिविटी तमे खाली एति मन रखो तार वैल्यू होचे आउ अधिक किछि मन रखिया दरकार नै म्यू नॉट इक्वल्स टू तार वैल्यू होची 4 पाई into 10 to the power minus 7 म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई into 10 to the power minus 7 वैल्यू टा मन रखो जेमिति हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रे एप्सिलॉन रो वैल्यू मन रखितिले एप्सिलॉन रो वैल्यू केते 1 by 4 पाई एप्सिलॉन रो वैल्यू केते एठार एमिति हमको मन रखिया को हेबो कंपेयर करिवा सेठी थिला एप्सिलॉन नॉट जार वैल्यू मन रखितिले 8.85 into 10 to the power minus 12 एठे पिला माने किंतु होल वैल्यू टा मन रखितिले मने पका जस्ट कंपेयर इट इलेक्ट्रोस्टैटिक रे 8.85 into 10 to the power minus 12 whereas 1 by 4 pi epsilon ର value थिला पिला माने 10 9 into 10 to the power 9 एठारे हियर ए भलिया मन रखो कंपेयर करो मैग्नेट रे पडुचे म्यू नॉट परमिएबिलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पडुचे परमिटिविटी वैल्यू 1 by 4 pi epsilon ର वैल्यू एति की एठे म्यू 0 by 4 pi रो वैल्यू कंपेयर करी पड़ो एले तुमको इजी वेरी इजी म्यू 0 by 4 pi just 10 to the power minus 7 because म्यू नॉट जगह पिला मन लिखिबा 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 4 pi cancel एति बनछ ओके 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 समस्त बुझिले कि सब किछि ते चार्ट कलो बुझिले कि नहीं ला माने ते चार्ट करो बुझिलो ना बुझिलो नहीं तमे कंपेयर करो आउ किछि नहीं जस्ट कंपेयर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रे कोन पडिचे मैग्नेटोस्टैटिक रे कोन सेठी चार्ज एठी पोल सेठी चार्ज रो स्ट्रेंथ एठी पोल स्ट्रेंथ एठी एप्सिलॉन नॉट एठी म्यू नॉट एठी 1 by 4 pi epsilon naught एठी म्यू नॉट by 4 pi सेठी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एठी भी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट सेठी डिपेंड करथिला नेचर ऑफ मीडियम यूनिट्स एठी भी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड डिफरेंट यूनिट्स ताले जस्ट कंपेयर इट ओके जेमिति पिला माने चरित्रडा अलगा केमिति देखो हमें प्रैक्टिकली जो स्टोरी रे कहानी रे जानिचे जदि सत्य जुग कथा कहबा सेठी प्रिंस होउछन्ती के लक्ष्मी नारायण तमन लक्ष्मी नारायण जुग सत्य जुग रे जदि त्रैतय जुग को आसीबा राम सीता रोल टा चेंज हेला किंतु सेही सेम लोक सेठी हेले कृष्ण रोल करथिले कृष्ण माने लक्ष्मी नारायण एटा हला राम सीता से भलिया गुण एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रे एप्सिलॉन नॉट एटा हला म्यू नॉट एटा हला 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 एटा हला म्यू नॉट by 4 pi ए भलिया कहानी मन रखो स्टोरी
Next we study magnetic dipole and magnetic dipole moment. ଯେମିତି ସେଟେ ପଢିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ and ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ରେ ପଢିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ and ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଠି ପଢିବା ଏମିତି magnetic dipole and related magnetic dipole moment or simply ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି magnetic moment. magnetic dipole moment, magnetic moment ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସେମ୍, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ moment or electric moment like this. Interesting. Just compare, କିଛି not confuse, interest ନେଇକି ପଢ seriously, be serious and be interest. ଯଦି ତୁମର serious ନାହିଁ, interest ନାହିଁ, ଇଆଡେ ଛଡୁ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ରେ क्वेश्चन ଆସିବ, ଇଆଡେ ଛଡୁ ଖାଲି, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବନି କହିଥିଲି। ଇଆଡେ ଛଡୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଆସିଲା, ବୁଝିଲା? serious and interest, be serious, be interest, ମଜା କରି କରି ପଢିବ, be interest, be serious। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ସେଟା ପଢିଥିଲେ, ଏଠି ଏମିତି ପଢିବା magnetic dipole moment, ତାକୁ କହନ୍ତି magnetic moment। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ magnetic dipole କଣ, define magnetic dipole। Define magnetic dipole। स्टेटमेंट लेख पिला माने, नोट्स लेख, an arrangement of, बुझिबा सहित लेख, an arrangement of two equal and opposite, an arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small magnetic length, formed a magnetic dipole। पिला माने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढिथिले दीटा चार्ज थिबो इक्वल ऑपोजिट, एठे भी लिखा है इक्वल ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक कथा कहूची देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड नेले इक्वल, ऑपोजिट गोटे प्लस गोटे माइनस, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2L 2A 2X जा नहीं परियो। मोर तो मने नहीं कोन ये जाइतिला, L की A बधे निया जाइतिला, हो A नहीं जिवा, पर मने नहीं 2L किबा 2A निया जाइतिला इलेक्ट्रोस्टैटिक रे, जहा नबो कन्वीनियंस 2L नेले ठीक कि 2A नेले ठीक। अच्छा एठे एमति कोन पिला मन देखो दीटा मैग्नेटिक पोल कोन ये जाइतिला 2A, वेरी गुड 2A नवा, वेरी गुड। एठे एमति दीटा पोल कथा चिंता करो, इक्वल ऑपोजिट माने कोइन तो गोटे नॉर्थ, ता माने गोटे M1 मैग्नेटिक डाइपोल की एक्टिंग करिवो, गोटे बार मैग्नेट आक्सास। मु तोर प्रीवियस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर रे पढैतिली, गोटे करंट कैरिंग लूप
मैग्नेटिक डाइपोल एक्टिंग करे मु कहितली गोटे करेंट कैरिंग लूप करेंट जेतले फ्लो गोटे पटे नॉर्थ पोल गोटे पटे साउथ पोल इक्वली इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर सिमिलरली बार मैग्नेट रे मध्ये पिला मन देखो सैटिस्फाई करछि ना नै आर पोल स्ट्रेंथ सेया सब बेले आर पोल स्ट्रेंथ सेया ऑपोजिट नेचर नॉर्थ रो नेचर जा साउथ रो नेचर नुए कंपेयर केमति करियो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे एटा सब बेले पॉजिटिव एटा सब बेले नेगेटिव सेमति कंपेयर करियो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे जेमति एटा जस्ट मुंडू गानिमो एटा यदि पॉजिटिव नेचर रहितो एटा नेगेटिव नेचर रहितो ए भलिया बुझिबो ऑपोजिट नेचर सेम मैग्नीट्यूड and a small distance of separation लिखा है कौन देखो small magnetic poles separated by a small magnetic length का कहबा दीटा पोल्स भीतर जो डिस्टेंस ताकू कोन मैग्नेटिक लेंथ तने एठी दीटा पोल हो गला ना नाही गोटे नॉर्थ गोटे साउथ इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर सैटिस्फाई करछि ना देखो सब स्टेटमेंट को देखो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट नेचर गोटे नॉर्थ गोटे साउथ ऑपोजिट नेचर दीटार स्ट्रेंथ इक्वल एंड स्मॉल डिस्टेंस दैट इज मैग्नेटिक लेंथ ताले बार मैग्नेट को हमें कहि परिबा गोटे मैग्नेटिक डाइपोल करेंट कैरिंग लूप को कहि परिबा गोटे मैग्नेटिक डाइपोल गोटे एटम टे जेते बेले गोटे न्यूक्लियस चारिपटे रोटेशन करछि एटम मींस कोन एटम भीतर इलेक्ट्रॉन अछि तनो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन सबडा अछंती मेसन एटम्स एंड न्यूक्लियस चैप्टर एडा सब पढिबो तेनो तुमर एटम चैप्टर मध्ये न्यूक्लियस सेंट्रल कोर रीजन जे कोन सोडा एटम रो सेंट्रल मासिव रीजन ता कोर रीजन ता कोन न्यूक्लियस भीतर तुमर न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स पॉजिट्रॉन्स मेसन्स ए सब पार्टिकल कंसंट्रेटेड है कि अछंती किंतु तार आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे से न्यूक्लियस रा आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिफरेंट सेल भीतर सब सेल एमति सब पडिबो के सेल एल सेल एम सेल एन सेल डिफरेंट सेल भीतर सब सेल केमिस्ट्री पडिचो सेल भीतर सब सेल माने कोडा सब सेल एसपीडीएफ केमिस्ट्री सेल सब सेल रूम भीतर यदि रूम थियो पिला माने ता कोनती सब रूम सेमति सेल भीतर यदि सेल थियो ता कोनती सब सेल लाइक दिस केमिस्ट्री बाटा छाडो तने हम एठे कंपेयर करिबा जे गोटे न्यूक्लियस चारिपटे गोटे एटम रो न्यूक्लियस रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन माने डिफरेंट सेल रे डिफरेंट ऑर्बिट रे रोटेशन करछंती जोडा बोर मध्ये कहितला एंगुलर मोमेंटम बेस करे L = nh/2 पाई n = इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई वगैरह वगैरह सेडा सब एटम न्यूक्लियर एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स रे पढिबो एनीवे छाडी दियो से पाठ ए पर्यंत चिंता करनी तुने एटा गोटे बार मैग्नेट गोटे मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करे एक्टिंग करे सिमिलरली गोटे करेंट कैरिंग लूप मध्ये गोटे मैग्नेटिक डाइपोल होबारे एक्टिंग हुए सिमिलरली जोटे न्यूक्लियस चारिपटे जते बेले एटम रो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करंती इलेक्ट्रॉन ने गोटे चार्ज पार्टिकल आसले फील्ड आसले कोन आछिबो करंट कंडक्शन जदी करैबा फील्ड आसले मैग्नेटिक फील्ड आछिबो इलेक्ट्रिक फील्ड जदी आछिबो मोशन रे ता माने चार्ज पार्टिकल मोशन रहिले मैग्नेटिक फील्ड आछिबो नले आछिबो नै मन रखती ओके केनो फोर्स आसीबो तुमरो डेवलप हो F = QVB sin थीटा वगैरह वगैरह एडा सब आगो पडिबो खाली एतिक मन रख करेंट कैरिंग लूप खाली तुम एतिक मन रख बार मैग्नेटिक डाइपोल करेंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल एनीवे तेनो दीज आर एग्जांपल्स ए गला तुम मानकर पिला माने मैग्नेटिक डाइपोल ऊपर नेक्स्ट पढ़िबा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ताकू केमती डिफाइन करिबा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिंबल होची कैपिटल M मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रे ऑलरेडी मु डिस्कस करची करंट कैरिंग लूप जेतले पढितला I = M = I * A मु पढैतली पिला माने एटा अच्छे आगु को आ केस आगु को छी सेति पे नॉट वरीड कहबे एटा आगु को छी बुझे देबी जदी एटा गोटे लूप अछि करंट कैरिंग लूप सर्कुलर लूप एवं आर एरिया होची ए पिला माने I अमाउंट रो करंट कंडक्शन होची ताले मैग्नेटिक मूवमेंट होची केते मैग्नेटिक मूवमेंट नॉट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट कहबा जा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहबे सा M = I * A मु लिखि छी तुमको डिराइव करछि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से चैप्टर लेक्चर एटा बुझेई कहिछि मध्य
m equals to I into a ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ର ୟୁନିଟ କୁ କମ୍ପେୟାର କର I ରହୁଛି ଆମ୍ପିୟର एरिया रहुछि मीटर स्क्वायर एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर मु बारंबार कहिछि मैग्नेटिक मोमेंट रो सिंबल होछि कैपिटल M M इक्वल्स टू I इनटू A I रहुछि एम्पियर एरिया रहुछि मीटर स्क्वायर एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहबा जा मैग्नेटिक मोमेंट कहबा से केमिति डिफाइन करबा इलेक्ट्रिक डाइपोल को पिला माने हम स्टडी करथिले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इनटू 2L P इक्वल्स टू मने पका इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढिथिले P इक्वल्स टू Q इनटू 2L एटा होचे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेमिति मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को केमिति हम स्टडी करबा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ एटे जिंदी P इक्वल्स टू Q इनटू 2L एटा M इक्वल्स टू M इनटू 2L ए स्मॉल m टा कोनती पोल स्ट्रेंथ एटे डाला चार्ज एटाला पोल स्ट्रेंथ तने मैग्नेटिक चार्ज टा को कंसीडर करा जाय पोल स्ट्रेंथ बोली एटे लेंथ थिला 2L स्मॉल डिस्टेंस एटे हला मैग्नेटिक लेंथ 2L और कैपिटल M टा कोन एटा हला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एटा हला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने स्टडी नेक्स्ट क्लास रे एलाबोरेट करबी टिके हला एटू पढिबा नेक्स्ट क्लास रे आज मु स्टॉप करछि नेक्स्ट क्लास रे एटू स्टडी करिया पिला माने स्मूथली जाऊ भलो से बुझी बुझी कंप्लीट करो दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एटू स्टडी करबा जेमिति इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ता तुमे सबले पढिथिलो नेगेटिव टू पॉजिटिव एठेमिति मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव magnetic field direction north to south in case of magnetic dipole moment direction is south to north okay thank you